Welcome to Swatatra Gupta classes. Today we shall start our 11th chapter from the book The Great Fun with Grammar. इसका 11th चैप्टर जो है बेटा टेंस का है, तो हम टेंस के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हम इसकी केवल सॉल्यूशन की बात करेंगे। पेज 90 पे फर्स्ट एक्सरसाइज इसमें करना क्या है बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट। ब्रैकेट में कुछ सुटेबल फॉर्म दी हुई हैं, हम इनको अप्रोप्रिएट भरना है। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल, पहली जो है एक एक्सरसाइज के रूप में एग्जाम्पल के रूप में की गई है। तो हम दूसरे से स्टार्ट करते हैं। योर सेल फोन इज रिंगिंग अगेन, इट समटाइम्स रिंग्स 30 times a day. Third, Gaurav eats too much. Every time I see him, he is eating. Number 4, buses usually ply along this road. No buses are plying today because the drivers are on strike. Number 5, I watch television whenever I can, but I am not watching television tonight because there is nothing interesting to watch. Number 6, they are working in the library at present. They have been working there for over an hour. Number 7, the cab is standing at the corner. It has been standing there since midday. Number 8, I found another pen while I was looking for the old one. Number 9, I will go to the gym tomorrow. I was going there during the summer vacation. Number 10, I have been learning Spanish for the last 2 years. I will learn French next year. Number 11, I have been reading this book for the last 2 weeks. I think I will have read it by the end of this week. Number 12, I met a strange looking fellow yesterday. I don't think I have met him before. Number 13, he wore a clown costume to the theme party last Sunday. He has worn that costume several times. Number 14, I ran races in school, but since college I run mainly marathon. Number 15, for how many years have you been living in Germany? I have been here for 3 years now. Now beta B exercise on page 91. Rewrite the following sentence using the correct tense form of the verb. हम इन sentences को correct form tense की लगाकर फिर से लिखना है। Given in the bracket, जो ब्रैकेट में दी हुई है फॉर्म। The first one has done as an example, पहला एक एग्जाम्पल के रूप में किया हुआ है। तो बेटा सेकंड से मैं केवल आंसर ही बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सेकंड का आंसर बनेगा बेटा, आई हैव नॉट स्पोकन टू हर फॉर अ मंथ। थर्ड, आई कंप्लीटेड द वर्क लास्ट नाइट। नंबर 4, आफ्टर दे लेफ्ट वी सेट डाउन एंड रेस्टेड। नंबर 5, द फायर हैड स्प्रेड टू द नेक्स्ट हाउस बिफोर द फायरमैन अराइव्ड। नंबर 6, we heard that a fire broke out in a nearby office building. Number 7, you ought to have brought her straight home after she fell into the lake. Number 8, he already has designed some important public building. Now he is working on the plans of a new 5-star hotel. Number 9, I expected to hear from you that he had won a gold medal for bravery. Number 10,
We are planning to go to a hill station. Last year we went to Simla, so we have decided to go somewhere else this time. We are waiting eagerly for the trip. नाउ बेटा पेज 92 पर हमें क्या करना है एक्सरसाइज में, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग विल और गोइंग टू अलोंग विद एन एप्रोप्रिएट वर्ब। हमें विल और गोइंग टू तो लगाना ही, इसके साथ में एक एप्रोप्रिएट वर्ब भी लगाना है। तो फर्स्ट देखते हैं बेटा, लुक एट द क्लाउड, इट इज गोइंग टू रेन या इट विल रेन, दोनों ही सही रहेंगे इसमें। नंबर 2, पीटर विल बी 15 नेक्स्ट वेडनेसडे। नंबर 3, we are going to my aunt in London this summer. Number 4, just a moment, I will help you carry the luggage. Number 5, next year there will be more traffic on the roads. Number 6, I am going to have a party. I have already invited my friend. Number 7, the centenary exhibition will be held tomorrow at the Fine Art Museum. Number 8, a prize will be given to the student who creates the best project for the science exhibition. Number 9, my sister is going to get married the day after tomorrow. Number 10, you will not win the national lottery, the odds are far too low. Now पेज 94, इसमें हमें करना क्या है बेटा, देयर इज एन एरर इन ईच सेंटेंस, हर सेंटेंस में एक गलती है, आइडेंटिफाई द एरर, उस गलती को पहचानना है, एंड करेक्टेड, उसको ठीक करना है। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू, पहला हमारे लिए किया हुआ है। तो हम नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे बेटा, शी सेड दैट शी विल नेवर डिसओबे मी, तो इसमें जो एरर है वो है विल, इसकी जगह क्या हो जाएगा, वुड। नंबर 3, शी वॉज एफ्रेड लेस्ट शी शैल गेट हर्ट, तो इसमें जो एरर है वो शैल की है, इसकी जगह क्या हो जाएगा, माइट। नंबर 4, द मोर मनी ही अर्नड द मोर ही वॉन्ट, तो फोर्थ में जो एरर है वो वॉन्ट है, इसकी जगह क्या हो जाएगा, वॉन्टेड। नंबर 5, आई शैल फॉरगिव यू सिंस यू एप्लोजाइज्ड, एप्लोजाइज की जगह क्या हो जाएगा, हैव एप्लोजाइज्ड। नंबर 6, वी आस्क्ड हर व्हाट हर नेम इज, तो इज की जगह क्या हो जाएगा बेटा, वॉज। नंबर 7, he respect his teacher more than he respected his father, 7 में respect की जगह क्या हो जाएगा, respected। नंबर 8, he was so tired that he decides to go to bed early, नंबर 8 में decides की जगह क्या हो जाएगा, decided। नंबर 9, he learned from bitter experience that pride went before a fall, तो went की जगह क्या हो जाएगा, goes। नंबर 10, you speaks as if you knew everything in the world, तो knew की जगह क्या हो जाएगा, know, KNOW। 11, she cannot see unless she wore glasses, तो 11th में wore की जगह क्या हो जाएगा, wears, WEARS। नंबर 12, I was informed that she is much better, तो इस की जगह इसमें क्या हो जाएगा, was। नंबर 13, we have been told that all men were born equal, तो 13 में वर की जगह क्या हो जाएगा बेटा, आर हो जाएगा। नाउ पेज 95, रीड द पैसेज केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। A pair of bulls has been drawing crowds to a Cambodian village. As Rajat Sethi, an Indian tourist, says, many believe the animals can perform miracles. These two ordinary looking bulls are said to be Praco and Prekio, scared animals of an ancient Cambodian legend. Their owner, a farmer, dreamed they were the
sacred pair and claimed that the two have cured people of their illness. One account is of a lame man whose legs was licked and then he was miraculously cured. I heard from my friend, so I feel so I came here 4 days ago. The bulls licked my leg. Now I can walk a bit further and I feel better, said the man. The feeble, the afflicted, and just the plain curious have been flocking to the farm ever since. The news has been traveled to the Cambodian government. However, the Prime Minister says he is skeptical of bull magic, but that doesn't stop hundreds of people from coming to see, touch, and feed the pair. Others go to extreme in the hope of experience a magical cure. I came here a few days ago. The bull have helped give me power and strength, says a villager who has walked miles to meet the bulls. There is a special shrine in the village so people can pray and the light incense in homage. Wooden beds have been set up so that the invalids can rest while they wait for the wolves to return from the field. They pay a small donation for their cure. Some local entrepreneurs have set up stalls selling bundles of grass and herbs to feed the animals. What the villagers have lost in tranquility, they have gained in extra income. And what's in it for the bulls? Well, the farmers no longer has plans to take them to the butcher's block. तो बेटा ये हमारा चैप्टर टेंसेस का एंड था। वीडियो कैसा लगा अपनी आप राय जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें।